I welcome you all. In this lecture, we will study about if we have n inputs, then how many Boolean functions are possible for those n inputs and about gate. Before moving to know about how many Boolean functions are possible for n inputs, we have one note that a number cannot be presented in both sum of mean term and product of max. Okay na? For example, suppose I have f equal to summation of 1 4 6 7, then if you want to convert it into pi, then what will be the value of this? We have 7, the maximum numbers. 7 can be represented in 3 bits, 3 binary bits. Okay na? This 7 is for decimal, this one for binary. It can be represented in 3 binary bits. It means what? How many inputs are there? 3 inputs. Okay na? So for 3 inputs, we have how many combinations? 8 combination. What will be the decimal value for that? The decimal value will be 0 to 7. Okay, so while converting this, we write the missing term or missing numbers from here. Okay now, so 1 is present here. We will start from 0, so 0 is not here, so you write 0 here. Again 1 is here, so we cannot write it in this format because a number cannot be presented in both sigma and pi. Okay na? So again 2 is not here, so you have to write here. 3, again 3 is not. 4 is here, so you cannot write in pi. 5, okay. 6 is here, you cannot write here. 7 is here, you cannot write here. Okay na? So what will be the pi? The value of pi is 0235. Okay, I'm trying to say that same number cannot be presented in sigma and pi. Okay na? Okay, so now we have to move on total possible function. Total possible Boolean function. Okay na? So if we have n inputs, then how many Boolean functions are possible for those n inputs? We will study here. So suppose we have 2 inputs. We have 2 inputs, x and y. So if we have 2 inputs, then how many combinations will be there? We know that if we have n inputs, then for n inputs we have 2 to the power n combination. So for 2 inputs it will be 2 to the power 2, that is 4 combinations. So how we write that? Put 2 to the power 0 for LSB, 2 to the power 1 for x. Okay na? Here it is MSB. Okay na? So 2 to the power 0 is 1, so we place 1 0 and 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1 up to 4 combinations. Okay na? So 4 हो गए combinations. Now 2 to the power 1 is 2, so we place 2 0 2 1. How many times? 4 times, because we have only 4 combinations. Okay na? Now for these 2 inputs, how many outputs are possible here? I want to write.
ओके ना, बिकॉज फॉर वन आउटपुट वी कैन राइट वन फंक्शन, because for one output we can write one function. So what will be that? How many combination we can write? See here, we can write all zeros here. It is possible? Yes, it is possible. Then we can write 0 0 0 1. This output is also possible. Then 0 0 1 0. It is also possible. 0 0 1 1 is possible. 0 1 0 0. All these outputs are possible for these inputs. Okay na? 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1, 1 0 0. It is also possible. I am writing all the combinations that are possible for these inputs, all the combination of outputs that are possible for these two inputs x and y. ओके ना, तो x और y के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे पॉसिबल जो इनपुट्स हैं आई एम राइटिंग हियर, ऑल आर पॉसिबल. Okay, anything else possible? No. What I have written here, I have written combination of 4 bits. Okay na, you see here I have written combination of 4 bits. Okay na, so these many output are possible for these two inputs. For these two inputs, these many outputs are possible. पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं, ठीक है ना. तो जितने आउटपुट होंगे उतने ही हमारे फंक्शंस भी पॉसिबल होंगे, बिकॉज हर एक आउटपुट के लिए वी विल राइट वन फंक्शन, है ना, वन बुलियन फंक्शन, एंड वी नो हाउ टू राइट दैट बुलियन फंक्शन. two approaches are there, min term and max term approach. Okay na, so this is our function 0, function 1, function 2, function 3, function 4, function 5, function 6, function 7, function 8, function 9, function 10, function 11, function 12, 13, 14, and it is 15. So total how many functions are possible? 16 functions. So total 16 functions are possible, and those are 2 to the power 2 to the power 2. If you write like this, then it gives you 16 to the power 4. 2 to the power 4 is 16. Okay na? So for two inputs, how many functions are possible? 16, that can be written as 2 to the power 2 to the power 2. For three inputs, how many functions are possible? 2 to the power 2 to the power 3, that is 2 to the power 8. It will be 2 to the power 8 is 256 functions. Okay na, this is 16 functions. Similarly, for n inputs, total how many functions are possible? 2 to the power 2 to the power n. This will be the formula. These much functions are possible. If you want to write the name of all these functions, you can write easily. This is null. When we get 0 as output for all the inputs, then that function is known as null function. f1 is 1. So if we consider sum of min terms, then the output will be here 1. X की value 1 है, x is 1, y is 1. So in min term we write 1 as normal input, so it will be x y. एक्स वाई किसका फंक्शन होगा? एंड का.
we will study today. Okay na? So what is the value of this? It is, if we write sum of min terms, then this function is known as, so it is x, it is y bar, so it is xy bar. Okay na? It is xy bar. Xy bar is known as inhibition function. Inhibition. So inhibition function is either we have x bar y or we have xy bar. Okay na? These two are called as inhibition. तो चाहे x बार y आए वो भी इनहिबिशन होता है, एंड एक्स वाई बार आए देन वो भी इनहिबिशन ही बोला जाता है. ओके ना? So for this we have two outputs. So what will be the, so for f3 we have 2 1. So in sum of min term we can write it as xy bar and it is written as xy. So it will be xy bar plus xy. Okay na? By using sum of min term. So it will be x common kar lo, y plus y bar is 1. So it will be x is it. What it mean? It means that x is transferred to the output. So it is known as transfer function. This is known as transfer function. Now for this one is 1, so it will be x bar y. X bar y is known as inhibition function. I have already mentioned. It is inhibition function, you can see here. So either it is x bar y or xy bar, it is inhibition function. Next we have this one. So for this first one we can write as x bar y plus, for this second one we can write it as xy. So what will be that? Y. So it is also called transfer function. Y is transfer at output. Okay ना? तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर. तो either we have output as x or y. Okay na? Either we have x or y, it is called as transfer function. Now next one is this and this. What will be the output for this? It is x bar y plus xy bar. Which gate it is? XOR. XOR का साइन होता है ये. It is XOR. Okay. Now I want to write for this. So we have 1 0 only, so go for that only. So when we consider max term, then what will be the output? The output will be, in max term 0 represent normal form. Okay na? So here we have 0, so we write x normal form. Y is also 0, so you write y. In between which operation we have to place ORing, because to create max term we ORing all the variables in such a way that bit 0 represent normal form and bit 1 represent complemented form. So it will be x plus y. X plus y is which gate? OR gate. Okay. So this function is known as OR gate. Now go for this. We have 1 here. So it will be output 1 is considered, means which term? Min term. In min term 0 is represented as complemented form. So we will write here x bar, and y is also represented as complemented form because y is also 0, and in between which operation will be taken? AND operation, because min term is created
by taking ending of all the variables in such a way that bit 0 represent complemented variable and bit 1 represent normal variable. It can be written as, okay, which gate it is? NOR. और पे मैंने नॉट लगा दिया ऊपर, so it is NOR. It is NOR function. Now go for F9. So F9 we have output as this one. So it will be xy plus x bar y bar. Which gate it is? XNOR. Now go for this for 10th functions. I will write each and every function name here, okay na? So for this one we will go for x bar y bar. For this one it is xy bar. What we will get here? Y bar. So y bar is not get. Okay na? It is not get. Go for this. So majority is 1, so we will move to for 0. So for 0 it is max term. So in max term, normal variable is represented as 0 and complemented is 1, and in between we are ORing, so it will be x plus y bar. This function is called as implication function, okay na? So I am writing here implication function is known as, either it can be written as x bar plus y or x plus y bar. Both are called as implication function, okay na? So this function is called as implication. Now we will move for this. So it will be x bar y bar plus x bar y. So it will be x bar. Again it is not get only. Okay, move for this one. So we have 0. So go for that. So it will be x bar plus y. X bar plus y. Again which function? Implication function. Because implication function present in two form. Either we will write x plus y bar or x bar plus y, okay na? Similarly for inhibition function, x bar y or x y bar, okay na? Now for 14th F14 it will be 0 here. So we are writing here functions for this 0. It will be x, because x is 1, so we can write in max term form. So it will be x bar. 1 is represented as complemented form. It will be y bar. For De Morgan's law we can write it as this, okay na? Which gate it is? AND gate. And when all the outputs are 1, this function is known as identity function, okay na? So you know all the 16 functions name also. So if we have 2 inputs, then total number of Boolean functions are possible is 2 to the power n, okay na? We have proved here. So note, for n inputs, total number of Boolean functions possible is to the power 2 to the power. Okay, this is very important comment, always remember. My next concept is gate.
how many gates we are using? Not, and, or, and, nor, XOR, XNOR. Okay, so these three gate is called as basic gate, and these two are called as universal gate. These two are called as arithmetic gate because in almost all arithmetic operations these two are present. Okay na, we will see later. So logical gate has basic gate, universal gate and arithmetic gate. Basic gate are this, not, and, or, and universal gate are NAND, NOR, and arithmetic gate are XOR, XNOR. Okay na? So XOR is represented as this, XNOR is represented as this, and OR is represented as plus is this, and it is for bar. Okay na? So it can be represented as like this only. So now we will study about the properties of various gates. Okay na? So let us start. So we will study NOT gate at the last. Okay na? So first of all we start with AND gate. So we have AND gate. We will study all the properties of AND gate, including some formula based on AND gate in Boolean algebra. Okay na? We will study all those. So what is AND gate? All inputs are 1, then output is 1. This is the property of AND gate. अगर AND gate की सारे inputs 1 पे हों, then output will be 1. So first of all we will study about the structure of AND gate, how it looks like. So we have studied English alphabet. So D can be represented as this. This is the representation of AND gate also. Okay na? D means dog. अब dog है, is very जिद्दी, तो हमें क्या चाहिए? हमें 2 डंडे चाहिए. हमने क्या किया? 2 डंडे इधर से मारे आगे से और एक डंडा हमने पीछे से मारा. तो इट इज़ कॉल्ड एज 2 इनपुट AND गेट. है ना? तो दिस इज X. सपोज आई हैव X and Y as a input and F as a output. Okay na? So the first point is AND gate is how AND gate looks like. So it is our. Okay. Now the second point, we move on the second point. So we write the truth table of AND gate. How many inputs are there? X, Y are inputs, and we have F as a output. So for 2 inputs AND gate, how many combinations will be there? 2 to the power 2 combinations are there. So it is 4 combinations. So it is 0 1 0 1 0 0 1 1. Okay, what will be the output here? For AND gate, if all inputs are at 1, output will be 1. So all inputs are 1 in only one cases, that is last case, so output will be 1, remaining will be 0. Okay, so this is the truth table of AND gate. Now I want to write function of AND gate. Okay na? We already know, but I want to derive from here. Okay na? So we can write in 2 ways. This is one. First we consider sum of min term, then we consider product of max term. So in 2 ways we can write the function for
any gate. Okay na? So for this we have, if you talk about this one, so we are using sum of min term. So in min term, x1 is represented as a normal variable and 0 is represented as complemented variables. So it will be x, y is also 1, so it will be y, and in between we are using min term approach. So in between we have AND operation, so ANDing all the variables. So what will be the formula for this? Formula is f equal to xy. This is the function of AND gate. We can write one more function for AND gate. I will show you here. In the first approach I have considered 1 as output. Now in this approach I will consider 0 as output. Means which approach? Product of max term. So in product of max term, what will be the value for this? Write max term for this. It is x, because 0 is represented at normal variable in max term, and we are ORing to get max term. So it will be x plus y, it will be x plus y bar, it will be x bar plus y. What will be the value? We have how many? 3 max term, so we will take product of that because it is product of max term. So by using product of max term approach will be x plus y, x plus y bar, x bar plus y. Okay, so we can write in two ways, but which is popular? This one. Why it is popular? Because इसमें क्या होता है, एक ही टर्म होता है, that's why it is popular. है ना? In this part we will check whether AND gate is obey commutative law or not. So commutative law. Commutative law means, what is the function of AND gate? The function of AND gate is xy. Okay na? So if we write it as yx and both are equal, xy equal to yx, then we say that it holds commutative law. Holds commutative law. So let us prove that. So have LHS. Suppose I have x equal to 0, y equal to 0. So what will be xy? It will be 0 only. So if you, because why it is 0? Because x is 0, y is 0, we will get 0 as output. Okay na? So for right hand side, yx equal to 0 into 0, that it will be 0. Okay na? Same things, both are equal. Okay. Now if you want to take x equal to 0, y equal to 1, so in that case LHS equal to xy means 0 1. So for 0 1 output will be 0. Okay, for RHS it is yx means 1 0. 1 0 is this one, 1 0, output is 0. So both are again equal. It means that AND gate holds commutative law. है ना? यानी अगर हमारे पास एक्स वाई कहीं हो तो उसको हम वाई एक्स लिख सकते हैं. ठीक है ना? बिकॉज AND gate holds commutative. So next, fourth point is associative law. Associative law क्या बोलता है? If we have 3 inputs and we take AND operation on yz first and the result will be ANDed with x, or first we perform AND operation between x and y and the result will be ANDing with the third variable, that is z.
है ना. If both are equal, then we tell that it holds associative law. है ना. So let us check LHS. Let x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 1. Any number you can take, any combination we can take. Okay na. So it will be x, y, z. X is 0, y is 0 and it is 1. So for first we perform AND operation for this. So it will give, both inputs are not 1, so it will give 0. So 0 dot 0, it will be 0 only. Okay na. For right hand side we want to go, so xy dot z. So it is 0 dot 0 dot 1. So it will be 0 dot 0 is, so in AND gate, if both the inputs are 0, then output will be 0. If any one is at 0, output will be 0. Both are equal. It means what? AND gate holds associative law. Okay na? It means what? AND gate holds associative law. Now the next point 5. In the fifth point, we will study about the control inputs of control input for AND gate. What is control input? Control input means if we fix one input of AND gate at 0 or 1. Okay na? I'm going to fix one input of AND gate. Okay? मैंने एक इनपुट को क्या कर दिया? परमानेंट 0 कर दिया और परमानेंट 1 कर दिया. Then how our AND gate behaves? Okay na? We are going to decide here. So let us check. So this is our AND gate. I have fixed one input at 0 and I am changing the input given in other input. Okay na? The input value given in other input I am going to change. Then we will see about how our AND gate behaves for such conditions. Okay. So write here the truth table. So it is 0 0, output will be 0. X y is f. 0 1, output 0. 1 0, output 0. 1 1, output 1. Okay. Now go for that. So if we place 0 on the second input, what will be the output? 0 0. At 0 0, output is 0. So we will get 0. If we put 1 here, so 0 1. 0 1, output will be 0. Output will be 0 for 1 also. तो अगर आप पहले 0 दोगे, then output we will get 0. If we give 1 as output, then output will be again 0. Okay, what it mean? It means that if you give Rajnikant here, so it will be 0 only. Output will be 0. आप रजनीकांत को भी इधर दे दोगे सेकेंड इनपुट्स पे, आउटपुट विल बी 0. ओके ना. तो व्हाट इट मीन, if one input of AND gate is fixed at 0, then whatever value you are going to give on second input, always output will be 0 for AND gate. जब ऐसा कभी हो, whenever this happen that on changing input output will not get disturbed, then this input is called as disable input. Which one? 0 is called as disable input. जो परमानेंट हमने फिक्स किया है, that input is called as disable input. Why it is called as disable input? Because if we fix one input at 0, then AND gate act as disable circuit. Disable circuit means अगर आप दूसरे इनपुट पे
आप वैल्यूज चेंज करते जाओ तो भी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा. तो दैट्स वाई दिस इनपुट इज कॉल्ड एज डिसेबल इनपुट, बिकॉज आउटपुट इज नॉट गोइंग टू चेंज and keep on changing values on second input. Okay na? I think you are getting my points. So it will be acting as disable input. तो डिसेबल मीन्स ये नहीं होता कि आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना. डिसेबल इनपुट का मतलब ये नहीं है कि अगर ज़ीरो, एक इनपुट को हम ज़ीरो पे फिक्स कर दें, यानी डिसेबल इनपुट पे फिक्स कर दें, दैट इज़ ज़ीरो, तो हमारा आउटपुट नहीं देगा एंड गेट, ठीक है ना. आउटपुट देगा बट आउटपुट में चेंज नहीं होगा, वही सिमिलर आउटपुट बार बार हमें मिलेगा, ठीक है ना. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डिसेबल इनपुट. नाउ द नेक्स्ट वन इज some student can tell that why it is zero, I am going to fix one. हाँ, क्योंकि मेरा राज है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा. हाँ, तो हाउ इट बिहेव्स वी विल स्टडी हियर. I am going to give 0, so what will be the value here? 1 0, 1 0 output will be 0, and now I am going to give 1, so 1 1, at 1 1 output is 1, output 1 हो जाएगा. What it mean that? It means that whatever input you are giving on this second line, okay na, on second terminal, that input is going to transfer at output. मतलब 0 दिया तो यहाँ आउटपुट पे 0 मिला, 1 दिया आउटपुट पे 1 मिला. हेंस अगर रजनीकांत देंगे इनपुट पे तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? रजनीकांत सर, द ग्रेट एक्टर, okay na. So if you place Rajnikant here in the second input, so it will produce output as Rajnikant, okay na. So what it mean? It means that जब भी हम एंड गेट के एक इनपुट को 1 पे फिक्स करेंगे और वी आर कीप ऑन चेंजिंग ऑन द सेकेंड इनपुट, तो जो भी वैल्यू हम वहाँ सेकेंड इनपुट पे रखेंगे दैट वैल्यू विल कम ऑन दी आउटपुट. वही वैल्यू कहाँ आ जाएगा? आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है ना. सो इनपुट के चेंज होने से आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है, दैट्स वाई दिस इनपुट इज कॉल्ड एज इनेबल इनपुट, ओके ना. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? कि जो भी आप इनपुट पर दे रहे हो दैट इज कम इन द आउटपुट. जब भी कभी ऐसा हो कि आप जो भी यहाँ इनपुट को दो दैट विल कम ऑन आउटपुट, ठीक है ना. तो 0 दिया तो 0 आ गया, 1 दिया तो 1 आ गया, तो दिस इज कॉल्ड एज बफर. तरह के गेट को हम क्या कहते हैं? वी विल कॉल इट एज बफर. तो एट वन मीन्स एक इनपुट को अगर हम एंड गेट के 1 पे फिक्स कर देते हैं, देन एट 1 एंड गेट behaves as buffer, ओके ना. एंड गेट कैसा बिहेव करता है? बफर. इसका यूज़ कहाँ है? यूज़ यहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव several AND gate here connected in this fashion. So this is given and the input supplied here is x and we are fixing one input of AND gate at 0, ओके ना. तो सारे जितने भी गेट यहाँ पे कनेक्टेड हैं एंड गेट, उन सब का एक इनपुट मैंने क्या किया है? आई हैव फिक्स्ड एट 0. सो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस? कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है. सपोज वी आर कनेक्टेड 1000 एंड गेट in this fashion,
तो व्हाट विल बी द आउटपुट? ओके, सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, जब भी हम एक इनपुट को वी आर फिक्स्ड एट 0, then it is behaves as disable input, and what will be the output for that? 0. So it will come what? 0. No need to calculate all these things, the output of each AND gate, okay ना, because it is 0. यहाँ पे आप कुछ भी दे दो, रजनीकांत को दिया था हमने, देन रजनीकांत सर, ओके ना, I have given Rajnikant sir here, so output will be 0. So if you give x here, then also output is 0 ना, बिकॉज रजनीकांत आउटपुट पे दे रहे हैं, देन आउटपुट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कोई भी और चीज़ देंगे तो आउटपुट वैसे भी नहीं चेंज होगा, ओके ना, गेटिंग माई पॉइंट? सो आउटपुट विल बी 0 फॉर दिस केस. सपोज वन मोर एग्जाम्पल, सपोज आई हैव कनेक्टेड AND gate again in similar fashion, but in this case I have given x here, और बाकी जो इनपुट्स हैं उनको मैंने कनेक्ट कर दिया 1 से. I have connected with 1, ओके ना. सो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस? तो गो फॉर अगेन रजनी सर. रजनी सर को हमने यहाँ देखा था, ठीक है ना. इफ इट इज़ 0, आउटपुट विल बी 0. इफ इट इज़ 1, आउटपुट विल बी 1. इफ वी वांट रजनी सर हियर, we are going to give Rajni sir in the second input, then output we will get Rajni sir, okay na. So what will be the output if we are fixed at 1 input at 1? If we are fixed 1 input at 1, then the circuit behaves at Rajnikant sir, okay na. It is x, again x, 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 okay ना. सो 1 पे रजनीकांत सर जो है अपना कमाल दिखाते हैं, एंड ही डोमिनेट ऑन द आउटपुट, ओके ना. जब भी हमारा 1 पे होता है, तो इफ़ यू गिव रजनीकांत एट इनपुट, देन आउटपुट विल बी रजनीकांत सर ओनली, है ना. तो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस इज x. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज अनयूज्ड इनपुट. Unused input. Unused input means suppose I have AND gate, और इसके एक इनपुट पे we are giving some value, but in second input we are not giving anything. Then how this problem we can manage, okay na. What will be the function? We have two solution for that. ओके, वी हैव अनयूज्ड इनपुट, वी आर प्लेसिंग x हियर. तो यहाँ पे जो अनयूज्ड इनपुट होता है उसको हम मानते हैं इट इज़ एट लॉजिक 1. ओके, दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. तो बाय विच मेथड? इट इज़ कॉल्ड एज पुल अप मेथड. पुल अप मेथड, दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज पुल अप मेथड, ठीक है. पुल अप मेथड में क्या होता है, जो भी अनयूज्ड इनपुट होता है वी विल टेक 1. What is second solution? Second solution is we have this, have x, here f. तो in the second solution हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ओपन इनपुट है या फिर जो भी अनयूज्ड इनपुट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओपन इनपुट. तो जो भी हमारा अनयूज्ड इनपुट है या जो भी हमारा ओपन इनपुट है, दैट विल बी कनेक्टेड विथ अदर इनपुट. इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, है ना. This is the second solution. So either this or this, you can use anything. If input value is not given at AND gate, है ना, and input is not given at AND gate, then we will take at as 1, or we will connect that input with other input. तो दोनों में से कोई भी एक मेथड यू कैन अप्लाई. सपोज आई हैव वन एग्जाम्पल. इनपुट इज गिवन
Suppose I have this timing diagram. This is our input x and y, और ये टाइमिंग डायग्राम गिवन है उसका. तो कई बार पूछ देता है व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस, है ना. सो व्हाट इज आउटपुट फॉर दिस, वी विल स्टडी हियर. Okay, I am going to plot for AND gate. Input is given as timing diagram, that is this one and this one. So it can be asked what will be the timing diagram of function f, or output of function f. We have that x, y is asking for f. So we know that this label denotes 0, this one denotes 1. Similarly 0, 1. So it is 0, it is 1. So what will be the output of AND gate? It will be 0, because दोनों इनपुट होंगे 1 पे, then only it will give 1 as output. But यहाँ पे क्या है, 0. Next, it is 0, it is 1, so it will be again 0. Again it will produce 0. Okay, now it is 0, it is 1, again it is 0. So it is 0, it is 1, so again 0, because if both the inputs are at logic 1, then AND gate will give output as 1. So again it is 0, it is 1, again it is 0. Now 1, 1, what will be the output, is 1, because both the inputs are 1 here. Now 0, 0, so it will be 0. Again 1, 0, it will be again 0. 0, 0, it will be 0. Now it is 1, 1, so output will be 1. Again it is 0, 1, so output will be 0. So this will be the output diagram for AND gate. Our next gate is OR gate. OR gate is if both the inputs are 0, then output is 0, otherwise 1, otherwise 1. So how OR gate looks like, the first point is, this is the representation of OR gate. Suppose I have two inputs for this, it is 2 input OR gate. Okay, now so it is OR gate looks like this only. So the second point is the truth table for OR gate. So it will be x, y input, f is output. We will take 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So both the inputs are 0, then output will be 0. It will be 0, will be 1, 1, 1. Okay, na? Otherwise output is 1. So I am going to write function for this. So we are using which method? Max term. So at max term, 0 represent normal form, 1 represent complemented form. So it will be x, y, and we are taking OR operation, so it will be x plus y. That's why जो हम पढ़ते आए हैं आज तक कि what is the function of OR gate, that is x plus y. Okay ना.
ये कैसे आया, यू नो दैट नाउ. Now suppose this approach is called as product of max term. I want second approach. I want to apply second approach on this. So what will be the value? Second approach is mean term approach. In mean term approach, it will be 0 represented as complemented form, 1 represented as normal form. So it will be x bar y, and in between end is x y bar. Similarly we can write as x y. So it will be f equal to x bar y plus एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई. लेकिन मेजॉरिटी यूज़ कौन सा होता है, ये होता है. क्यों? क्योंकि टर्म्स कम है उसमें, नंबर ऑफ टर्म्स आर लेस, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड, इट इज़ पॉपुलर. ओके ना, दिस फंक्शन इज़ पॉपुलर फॉर ऑर गेट, बट दिस इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ ऑर गेट ओनली. आप इसको सॉल्व करोगे ना, दोनों एक ही गेट के फंक्शंस हैं, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा. ठीक है ना. अगर आपको करना है तो कर सकते हैं. चलो मैं ट्राई करके दिखाता हूँ. एक्स बार वाई, यहाँ कॉमन क्या है, वी हैव एक्स, इट इज़ वाई बार प्लस वाई, वाई बार प्लस वाई इज़ 1, सो इट इज़ एक्स बार वाई प्लस एक्स. ठीक है ना. अब एक फंक्शन होता है ए प्लस बी सी इज इक्वल टू, बुलियन अलजेब्रा में वी विल स्टडी ए प्लस बी ए प्लस सी. So it will be A, it is B, it is C. So what will be the functions? It will be x plus x bar, x plus y. So this will be 1, will be the value x plus y. You can see here. Okay ना. तो जो दोनों functions we are writing both are same. बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन हैं दोनों सेम. ठीक है. तो I am going to check whether OR gate obey commutative law or not. So for commutative law we know that if x plus y, x OR with y is equal to y OR with x, then we say that commutative law holds. So x y f at 0 0 0, so take left hand side, x is 0, y is 0, it will be x plus y, x plus y is 0 plus 0, 0 plus plus, ये एडिशन नहीं है, इट इज़ नॉट एडिशन, इट इज़ ऑरिंग. तो 0 और विथ 0 इट विल बी 0. है ना. अगर मैं बाई मिस्टेक बोलता हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ और ऑपरेशन. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू y plus x, again it is 0 or 0, so it will be 0, both are same. What it mean? So you take any value of x and y, it always holds. Which one? Commutative law. So OR gate holds commutative law. This is our statement. OR gate holds commutative. Fourth is associativity. Check it by yourself. Okay na. So I am writing the result. It holds associative law. Now fifth point is control input. I am going to write the control input. We have OR gate and we are checking for control input. परमानेंट मैंने यहाँ पे 0 दे दिया, और दूसरे इनपुट में we will keep on changing the value. तो if we put 0 here, तो देखो यहाँ पे 0 0, आउटपुट क्या है 0, so output will be 0. If we put 1 here, 0 1, 0 1, output is 1, so output will be 1 here. If we put Rajni sir here, okay na, so we will get Rajni sir here.
ओके, व्हाट इट मीन कि जो भी इफ़ वी फिक्स्ड वन इनपुट एट ज़ीरो, तो दूसरे इनपुट में व्हाट एवर वैल्यू यू आर गिविंग दैट विल कम इन आउटपुट, ओके ना। तो एट ज़ीरो, तो दिस इनपुट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनेबल इनपुट, बिकॉज हम इनपुट चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट चेंज हो रहा है। तो एट ज़ीरो आर गेट बिहेव्स एज buffer, okay na. Now the next point is, again we have student उठा कहा नहीं सर I want to fixed at 1, फिक्स कर लो भाई। तो now I am going to change the value here, I am going to give 0. so if we give 0, so 0 1, at 0 1 output is 1, so output will be 1, 1 1 1 1 output will be 1. so if we give as here as per your eye, okay na, so output will be 1 only. so this input is called as disable input. why it is called as disable? because अगर हम 1 पे एक इनपुट को फिक्स करते हैं एंड वी आर कीप ऑन चेंजिंग इन अदर इनपुट, देन आउटपुट विल नॉट चेंज, आउटपुट इज ऑलवेज 1. आउटपुट विल नॉट चेंज का मतलब ये नहीं है, डिसेबल का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा गेट है वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना। डिसेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है, इनपुट हम चेंज कर रहे हैं तो वो आउटपुट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, उस आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. तो इट डजंट मीन दैट आउटपुट इज़ नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस. आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है बट वो चेंज नहीं हो रहा है इनपुट को चेंज करने पे. दैट्स वाई दिस वन इज कॉल्ड एज डिसेबल इनपुट. ओके ना. सो अगेन with same way you can make some example here. Again we have 1 lakh. okay? इस तरह से कनेक्टेड हैं एंड आई एम गिविंग 1 हियर एंड x हियर. बस हमने पहले गेट पे कनेक्ट किया है इसको एंड इन द सेकेंड गिव x1 x2 x3 सपोज इट इज xn. ओके ना. तो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस? व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस? तो फॉर दिस गेट since it is at 1 it always produce output as 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1. जब अब ये 1 आया तो फिर यहाँ आउटपुट क्या आएगा 1. अगेन ये 1 आया फिर यहाँ आउटपुट 1 आ जाएगा, चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो. तो अगेन इट इज़ 1, तो आउटपुट विल बी 1 ओनली. ओके. तो इस तरह से आप यू कैन ट्राई क्वेश्चंस. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज unused input or open input. so unused input means हमारे पास OR गेट ये है, इसके एक इनपुट पे हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे हमने x दे दिया. तो हाउ इट बिहेव्स, कैसे ये काम करेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. तो इट आल्सो हैज़ 2 solution. in the first solution if x is here then you put 0. okay ना. तो this method is called as pull down method. जब इसको हम AND गेट में पढ़ रहे थे then we are giving 1, we are letting 1 here. हम मानते थे क्या कि यहाँ पे क्या है 1 है. तो इससे हम क्या बोलते हैं पुल डाउन मेथड. द सेकेंड सोल्यूशन, दोनों में से कोई भी सोल्यूशन यू कैन अप्लाई. सेकेंड सोल्यूशन क्या है,
you can connect this unused input or this open input with used input, ठीक है ना, ऐसे कनेक्ट कर दो, क्लियर। तो आइदर दिस और दिस, यू कैन यूज एनी वन। अगेन वन एग्जाम्पल of timing diagram X, suppose this is given, and Y is given like this, then what will be the output? Which gate it is? OR gate. So we will जहाँ भी ट्रांजिशन अलग हो रहा है वहाँ वहाँ आप क्या कर दो, यू विल टेक दिस डॉटेड लाइन, क्योंकि बाकी पोजीशन पे तो आउटपुट चेंज नहीं होगा अगर इनपुट सेम होगा तो। ओके ना, सो आउटपुट डायग्राम विल बी, it is 0, it is 0, so output will be 0, 0 1, output will be 1, because both input are 0, then only 0, otherwise 1, so it will be 0, it is 0, so it will be 0, and this is 1, so this will also be 1, again it is 1, it is 0, so it will be 1 only, output will be 1 na, so it is 0, it is 0, the output will be 0, now it is 1. This will be the timing diagram for OR gate. Now we will try some questions based on the concept we have studied today. So this is the question for GATE 2008. Given F1, F3 and F in canonical sum of product form, that is canonical sum of minterm, okay ना, for the circuit F1, F2 AND gate से connect है, and F3, the result of F1, F2 is connected with F3 with OR gate, तो और यहाँ पे F है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, F1 is given, F1 is given, F3 given, F given, then it is asked about us is F2. What is F2? है ना। When you study discrete maths, वहाँ भी आपको एक बुलियन अलजेब्रा पढ़ने को मिलेगा, उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो वहाँ पे यूनियन होता है, यूनियन ऑपरेशन, ओके ना, वो हमारा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में OR गेट होता है, और जो वहाँ इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन, वो यहाँ पे AND गेट होता है ना, ये आप वहाँ पे पढ़ लेना। If we take union of any two, suppose I have one set is 1 2 3 and the second set is 4 5 2, so what will be the A union B? A union B में वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं दो आपके सेट A और B में हैं, इट विल बी 1 2 3 4 5। ए इंटरसेक्शन भी, ए इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन दोनों में होते हैं वो आते हैं, कॉमन क्या है, ओनली 2, दिस विल बी द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। So we have here F1 is given 4 5 6 7 8, F2 is not given, we have to find out. F3 is given 1 6 15 and F is also given, it is 1 6 8 15, है ना। तो यहाँ पे
F2 की वैल्यू क्या होगी? If we take first option, then F2 will be option A 4 6. ओके ना, इट इज एंड गेट, तो यहाँ क्या आएगा? इंटरसेक्शन इज 4 and 6, सो इट विल गेट 6 हियर. तो ये क्या है? इट इज यूनियन. आवर गेट इज एक्टिंग एज यूनियन. तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट विल बी 1 4 6 15. so for this F will be 1 4 6 15, जो कि रॉन्ग है, बिकॉज F मस्ट कम एज 1 6 8 15. नाउ गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन. so this option is not correct. Second option is 4 8. what we will get here? AND gate. It is AND gate, so it acts as intersection. so 4 8 will be here, because 4 8 यहाँ भी है, 4 8 आपका यहाँ भी है. so जो कॉमन क्या है? 4 8, तो वो यहाँ जाएगा. now it is 4 8, it is 1 6 15. what will be the value here? then in this case F will be 1 4 6 8 15. F की वैल्यू ये आएगी, बट F की वैल्यू क्या है? 1 6 8 15 है, सो इट कैन नॉट बी ट्रू. second is over. now third is 6 8. now try for 6 8. so it is not correct. for 6 8 we have 6 here, 8 here, so the result of this will be 6 8, and 1 6 15 is here, so we will get what? it is union na, so 1 6 8 15, we will get 1 6 8 15. this is the correct option. option C is the correct option. okay, in this way you can try. now the second question is, there is one operation x operation y is equal to x square plus y square. यानी यहाँ पे ये एक्सआर नहीं डिनोट कर रहा है, यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? उसका फंक्शन का डेफिनेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके ना, तो आपको इसको प्रूफ करना है वेदर इट इज़ कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये आपको प्रूफ करना है. सो फॉर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने के लिए यहाँ क्या चाहिए? एक्स ऑपरेशन वाई इज इक्वल टू वाई ऑपरेशन एक्स. अगर ये हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है. तो LHS एक्स एक्सआर वाई, इट कैन बी एक्सआर नहीं है, एक्स ऑपरेशन वाई, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. फॉर राइट हैंड साइड वाई ऑपरेशन एक्स, इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एंड इन बिटवीन जो ऑपरेशन है इट इज़ और ऑपरेशन. सो वी कैन से दैट और ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हियर. ओके ना, आर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ना, तो उसमें हम एलिमेंट्स के पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ. यहाँ से हमें पता चला कॉम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड हो रहा है. नाउ द सेकेंड वन इज एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी में क्या होगा? एक्स ऑपरेशन वाई पहले कर लो, देन जो रिजल्ट है उसका जेड के साथ ऑपरेशन कर लो. इफ़ इट इज़ इक्वल टू वाई जेड का ऑपरेशन पहले करो, एंड जो भी रिजल्ट आए इसका उसको ऑपरेट कर दो एक्स के साथ. तो लेट अस सी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? पहले इसका ऑपरेशन होगा, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑपरेशन जेड. तो इट विल बी अगेन, इट इज़ ए,
it is b, so it will be a square plus b square. What is a? X square plus y square का whole square plus z square. Okay, now right hand side, at right hand side what we have? X operation. First we perform y operation z, then जो रिजल्ट आएगा उसको we will perform with x. Okay ना, it will be x will be y square plus z square because definition is given this, है ना. So it will be x square plus y square z square. ये दोनों कभी इक्वल होंगे क्या? नो, बिकॉज दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो डज नॉट होल्ड एसोसिएटिविटी. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है बट एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं हो रही है. कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, द फर्स्ट ऑप्शन. ये क्वेश्चन था कब का? 2013 गेट का. इफ़ यू आर enjoying our videos, then please like, comment and subscribe our channel and share it with your friends. Thank you.